सो मार्स ऑर्बिटर मिशन आशिल्लें ते इतले कंट्रीनी इतले म्हणजे बिलियन्स ऑफ डॉलर्स खर्च केल्या, पण ताका सक्सेस रेट कमी आशिल्लो, पण इंडियेन कमी खर्चान पहिल्या शॉटान मंगळ विजय केलो. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की इंडिया हॅज ऑलवेज गिवन अ प्रायोरिटी. तुमकां विक्रम साराभाईचे सांगता न्ही, विक्रम साराभाईचे एक आसा की तांकां खबर आशिल्लें की इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्री. नेहरूजीन म्हणिल्लें तें तांकां खबर आशिल्लें. सो अशी एक स्टोरी आसा की ते सुद्दां ₹1 टोकन पगार घेताले. सो ही वॉज दॅट टायप ऑफ अ पर्सन. आणि ताका विजन आशिल्ली की वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. आणि पयलीं सगळे रॉकेट्स, सॅटेलायट्स तें सगळें केलें, कमर्शियल यूज ऑफ स्पेस बी सगळो केलो. बट वी कॅनॉट स्टॉप देर, वी हॅव टू गो नेक्स्ट. जर तुम्ही म्हणटात आमी डेव्हलपिंग कंट्री डेव्हलप्ड केन्ना जातले? डेव्हलप्ड कंट्रीचे सगळ्यांचे इस्रो आसा, आय मीन नासा आसा, इसा आसा, रॉस्कॉमोस आसा रशियाचे. डेव्हलप्ड कंट्रीसाचे एक हें आसा, कितें म्हणटा तांकां हायलायट आसा, दे हॅव ऑल super space programs. So if we want to become developed, we also need to have that. तुम्ही डेव्हलपिंगूच उरूंक सोदतात आणि गरिबी म्हणून जप करतले काय मातशे फुडें वतले. आता अजून कितली मिशनां आसा रोहित वचपाची आसा. गगनयान म्हणजे इट इज अ इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन कशें, जें परमनंटली एक स्टेशन कशें स्पेसान लॉन्च जातलें. आमची फुडलो जनरेशन, आमची भुरगीं वचूं शकतली थंय. जशी कल्पना चावला, सुनीता विलियम वचून रावन 6 म्हयने येवं शकतली. अशें गगनयान लॉन्च करपाचें आसा. आणि गगनयान लॉन्च करून तातूंत भितर वतलो कोण रिसर्चाक? एस्ट्रोनॉट्स ऑर इंडोनॉट्स जे आमी म्हणटात. सो आज हे एस्ट्रोनॉट्स कोण? हे अमेरिकेचे आणि रशियाचे वचचे ना, इंडियन वतले. आणि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आमकां आतां खबर ना की इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आतां हे टायमार एट दीस व्हेरी मिनिट रशियन भितर तांचे ट्रेनिंग चालू आसा. इंडियन्स आर देर, ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू बी सेंड टू स्पेस. इंडियन स्पेसान वचपाचें आसा. फुडें चंद्रार वतले. आतां चंद्रयान 1, 2, 3 सांगता हांव तुका, पण दॅट वील नॉट बी द एंड. चंद्रयान 4, 5, 6 आसतले. आणि मागीर फायनली दे वील बी अ मॅन लँडिंग ऑन द मून. इंडियन विल लँड ऑन द मून. आता तू म्हणटलो की 20 वेळा मून लँडिंग जाला, आमी ऑलरेडी आमी वेगळे व्हडले कितें सोदून काडटले. पण दॅट इज नॉट इट. चंद्रयान 1 जे आमी धाडिल्लें, ताणें कितें केलें की चंद्राचेर लिक्वीड वॉटर सोदून काडलें. इट वॉज सपोज टू बी इम्पॉसिबल. चंद्राक एटमॉस्फियर ना, और ताका एक एक्झोस्फियर आसा, ताका हार्डली एटमॉस्फियर आसा. सो आमकां अशें दिसता की लिक्वीड वॉटर खंय आसूं शकता, एटमॉस्फियर आसा थंय आसूं शकता, म्हणून अर्थार लायफ आसा. पण तें आमच्या चंद्रयान 1 रॉंग प्रूव केलें. इतले आमच्या नासान धाडून पूण चंद्रयानान सोदून काडलें की हां लिक्वीड उदक आसा. दॅट इज हाव इट इज. रिसर्च डेव्हलपिंग कंट्री तशें नासता थंय. यू हॅव टू टेक द नेक्स्ट लीप फॉरवर्ड, अदरवायज तूं नेक्स्ट क्वांटम लीप व्हरूंक शकना. सो दॅट इज वाय अ कंट्री हॅज टू गो हेड. आणि आमी सगळे इंडियन्सांनी एकूच काम करपा जाय. वी हॅव टू सपोर्ट आमची स्पेस अँड वी हॅव टू बी प्राऊड ऑफ दीस. आमच्या भुरग्यांक स्कुलांनी ही मेसेज पावपा जाय. आनी आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान आतां पावता की आमकां जबरदस्त फक्त कितें जय हिंद म्हणून आनी फ्लॅग हॉइस्टिंग आणि इंडिपेंडन्स डेचे व्हॉट्सएप फॉरवर्डान जायना. यू हॅव टू फील दॅट यू कम फ्रॉम अ कंट्री विच कॅन लॉन्च सॅटेलाइट टू द मून ऑन मार्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट. So this is what we are proud of. You nicely said that we have to support. I might be critical here. Obviously तुम्ही म्हटलं की पंडित जवाहरलाल नेहरू ते फकाणांनी झाले आणि ऑब्विसली वी टूक दॅट फर्स्ट बेबी स्टेप आणि त्याच्यातल्यान आमची सुरुवात झाली. आयझीरो सारखे आमचे व्हडली संस्था आसा. त्याच्यानंतर ऑब्वियसली वेन द लिडरशिप चेंज, आय थिंक लाल बहादूर शास्त्री ज्यांना ऑफ अफेअर्स असले त्यांना तांची प्रायोरिटी वेगळी असली. तांची प्रायोरिटी एग्रीकल्चर असली, हंगर असली. ऑब्वियसली वी वर दॅट डेव्हलपिंग कंट्री बिकॉज आमचे जस्ट इंडिपेंडन्स झाले. सो ताणी प्रायोरिटी वेगळी दिल्ली अँड ऑब्वियसली ही सायड दिस कांट वेट. तुतल्यान कितें फायदो? मॉनिटरी बेनिफिट्स पळोवंक लागले आमी, कितें मेळटलें आमकां काय म्हणून. हांव खरेंच विचारपाक सोदता, ऑल दीज इयर्स नाव 70 ऑड इयर्स, आयज अजून हे आर्ग्युमेंट आसा, अजून आसा की बाबा तुम्ही चंद्रार आणि बाहेर कित्याक धाडटा जेन्ना हांगाच तुम्ही लक्ष दिया, आमचे रस्ते म्हणा किंवा बाकीचे फॅसिलिटीज म्हणून आणि थंय तुम्ही मिलियन्स अँड बिलियन्स मोडटा तेन्ना हांगा तुमकां 1000 मोडपाक वयर जाता. हाऊ डज दिस अफेक्ट आवर फ्युचर? ओके, आता स्पेस रिसर्च कित्याक जाय दॅट इज अ सेपरेट थिंग. पण इंडिया, वाय इंडिया हॅज टू गो टू स्पेस हे तुमकां 2-3 अशे इन शॉर्ट हांव सांगता तुका. ओके, आता कितें जाता न्ही, एक आज आमचे हें आसा चंद्रयान किंवा स्पेस प्रोग्राम हो कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. आतां चंद्र आसा हो फक्त इंडिया फक्त आपले कितें वचून फ्लॅग लायतले आनी सगळे कंट्रीक सांगतले आमी व्हडले, तशें न्हय. आमी एक इंडस्ट्री तयार करीत आसात.
बारीक सारखे लक्ष दी. इंडिया इज प्रिपेरिंग अ इंडस्ट्री. आता आमची स्पेस इंडस्ट्री इज अ मल्टी बिलियन इंडस्ट्री. एदी व्हडली इंडस्ट्री की अमेरिकेक स्वता नासा कडेन तितले फंड्स ना तातूंत पंप करपाक, म्हणून तांणी प्रायव्हेट एंटरप्रायज ओपन केला. आता प्रायव्हेट आता एंटरप्रिन्युअर्स स्पेस टुरिझम बी आता चालू जाता. सो आता केन्नाय खंयची इंडस्ट्री प्रायव्हेटायज केन्ना जाता जेन्ना ताजे खूब व्हडलो डिमांड आसता. सो अमेरिकेन जेन्ना स्पेस प्रायव्हेटायज केल्या तुवें समजुपाचें कितली कंट्रीज आसात जांकां सॅटेलायट्स लॉन्च करपाचे आसात, कम्युनिकेशन, मोबायल्स हे ते खंयच्यान करतले. वेस्टर्न कंट्रीज आर व्हेरी कॉस्टली. सो इंडिया इज अ गुड फर्टायल ग्राउंड फॉर लॉन्चिंग सॅटेलायट्स. आणि आमचे कडेन आसा, आमचे कडेन लॉन्च पॅड 45 सेंटर्स आसा इंडियन इस्रोचे. सो आमचे कडेन भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आणि आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात. आणि हे चंद्रयान मिशनाच्यान आमी एक्सपिरियन्स तयार करीत आसात. सो हे आमी हें धाडलां, आमचें रॉकेट धाडलां चंद्रयान लॉन्चर. इट इज वन ऑफ द हेवियस्ट रॉकेट. दॅट इट सेल्फ इज एन अचिवमेंट. त्या वर्ल्डाक दाखोवपाक की आमी हेवियर आनी हेवियर पेलोड्स लॉन्च करूं शकतात. सो तुमचें कितें आसा दियात, आमी लॉन्च करतात. दिस इज वन थिंग. एडवर्टिजमेंटूय जाला आनी इंडियान आपलें दाखयलां की रुत्पो दाखयला की आमी कितें कितें करूं शकतात. सो एवरी कंट्री हॅज सीन वॉट इंडिया कॅन डू. आमची कॅपॅसिटी कापासितात दाखयल्या. दुसरें म्हणजे कितें आसा, स्पेस ते फायनल फ्रंटियर आसा ताका खूब एप्लिकेशन्स आसता. एक ल्हानूच सांगता हांव फक्त विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टायम. कितेंय इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक जाय जाल्यार मिनरल्स जाय, मेटल्स जाय, लोखंड जाय, मँगनीज जाय, सगळें जाय. आमी सगळें तें उत्पन्न करतात मायनिंगाच्यान. जर तुका सक्सेस जाय, तुजी कंट्री फुडें सरपा जाय जाल्यार यू हॅव टू हॅव रिसोर्सीस. फक्त इकॉलॉजी, एनवायरमेंट म्हणून मायनिंग बंद करूं शकना. धातू खंयच्यान येतलो, इंडस्ट्री खंयच्यान उबी रावतली. घड्याळ, मोबायल सगळ्यान प्लुटोनियम मेटल्स म्हणून आसता, प्लुटोनियम ग्रुप ऑफ मेटल्स आसता. दे आर व्हेरी कॉस्टली. ताजे शिवाय हें सगळें जायना, मोबायल्स बी जायना. सो ते खंयच्यान हाडटले. दॅट इज वाय दीस थिंग्स, गॅजेट्स आर एक्सपेन्सिव्ह. सो हे सगळें एम्पल क्वॉन्टिटीन आमच्या अंतरिक्षात मेळटा. ते एस्टरॉइड्साचेर मेळटा, मुनाचेर आसा, सगळे कडेन आसा. सो स्पेस मायनिंग आतां तरी तुमकां दिसलें की कितें तरी हॉलिवुडाचें सायन्स फिक्शन मुवी न्हय, बट इट इज अ ट्रूथ. इट इज एक्चुअल रियालिटी की स्पेस मायनिंग इज द फायनल फ्रंटियर. एस्टरॉइड्स आसात, तांचेर भरपूर प्लुटोनियम ग्रुप ऑफ मेटल्स आसात. ती जर आमी मायनिंग करपाची कॅपॅसिटी आसा जाल्यार आमी सामके संपन्न जातले. आणि मेन म्हणजे आमच्या ह्या चंद्राचेर यू मायट नो ऑर नॉट नो, एक प्रकारचो पदार्थ आसा ताका H3 म्हणटात, हिलियम 3. आणि हिलियम 3 इज अ अनबाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी. जो जर आमी तो युटिलायज करून आमी तो यूज करूं शकले जाल्यार देर वील बी अ पॉल्युशन फ्री सप्लाय ऑफ पॉवर, कितें म्हणटा ताका, आमचे एनर्जी फॉर दीस प्लॅनेट. विदाउट पॉल्युटिंग द प्लॅनेट यू वील बी एबल टू सस्टेन दीस प्लॅनेट. सो इतले फ्रंटियर्स आसा की हांव अशें म्हणटा, कॅन वी टुडे नॉट एफोर्ड टू गो टू स्पेस. आणि इंडिया इज सच अ बीग कंट्री. आमचे इतले पॉप्युलेशन आसा, आमचे इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट करतात. आमकां फुडें खूब कितें कितें जाय, आमची भुरगीं फाल्यां वाडटली, ती कितें करतली. सो वी नीड टू क्रिएट द ग्राउंड फॉर देम. सो इंडिया हॅज टू इन्वेस्ट नाव इन स्पेस रिसर्च. सो आमी, आणि इट इज नॉट जस्ट अबाउट हें न्ही फक्त लोकांक दाखोवपाक आनी इंडिया इज दी व्हडली कंट्री. इंडिया एक इंडस्ट्री तयार करीत आसा स्पेसाची. सो फाल्यां आमची जेन्ना इंडस्ट्री वयर पावतली तेन्ना अदर कंट्रीज वील लूक, बिकॉज एवरी कंट्री कॅनॉट डू इट. ओनली 6 countries इन द वर्ल्ड कॅन लॉन्च रॉकेट्स आणि ओनली 4 countries हॅव रीच द मून. हे सगळे डेटा आसात, ते जनरल नॉलेज. तातूंत इंडिया, सगळे कडेन इंडिया आसा. सो इंडिया आपले कितें म्हणटा, आपली इंडस्ट्री तयार करीत आसा स्पेसाची. सो तातूंतल्यान मेटल्स, मायनिंग, मागीर मून कॉलनायझेशन, खूब कितें कितें आमचे फुडें प्लॅन्स आसात. दुसरें, इन द लॉंग टर्म हांव चंद्रयानाचे आनी इंडियेचेच उलयना. आता कितें जालें, चंद्रयान 1 फक्त उदक सोदून काडलें पण लँडींग जावना. सेकंडान लँडींग अटेम्प्ट केलें पण ते क्रॅश जालें. बिकॉज जस्ट 30 किलोमिटर्सा कडेन कितें तरी प्रॉब्लेम जालो ना. 1/2 किलोमीटर आहे ते सामकें लागीं. लोकांक ते खबर आसना, बट लोकांनी मागीर मेम्स पळयले इस्रोचो चेअरमॅन आणि ते सगळे. If I say that, people will remember Chandrayaan 2. हांव जरी म्हणटा न्ही रोहित, चंद्रयान 2 जेन्ना क्रॅश जालें पळय, फेल जालें मिशन, लँडींग फेल जालें, ताजो ऑर्बिटर फेल जावं ना, तो अजून आसा. दॅट वील बी हेल्पिंग अस इन फ्युचर. सो तेन्ना जे लोक मेम करतात तांणी पयलीं स्वता आपले कडेन विचारचें. आनी सायकल शिकतना तूं पडनासतना शिकला, एकदा तरी धोपर फुटूना सायकल शिकतना. सो इंडियान कोणाची टेक्नॉलॉजी कॉपी करनासतना, नासाची घेनासतना स्वता तयार केला.
सो इल्लेशें कितें तरी जावपाक शकता. आतां वी विल लेट अस विश द बेस्ट ऑफ लक फॉर अवर चंद्रयान 3. लेट्स ओनली होप. आतां कांय उलोवपाचें ना, फिंगर्स क्रॉस म्हणटा तशें फुडें कशें कशें जातलें. आमी प्रयत्न भरपूर केल्या, इस्रोन आमचे भरपूर प्रयत्न केले. ह्या वेळा आमचो लँडर टफ आसा आनी ह्या वेळा आमच्या लँडराक फास्टर डिसिजन घेवपाचें सॉफ्टवेअर आसा आनी खूब कितें कितें म्हणजे तांकां लास्ट म्हणजे कळना की आतां कितें जावंक शकता, एक्सपिरियन्स आयला. सो हें सगळें तांणी केलां आणि तरी कितें तरी जाता किंवा जायना दॅट इज तातूंत आसता 50-50%. फिंगर्स क्रॉस, व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी विच यू से, व्हॉट इज द पर्सेंटेज? म्हाका तरी 100% विक्रम लँडर आमचो लँड जातलो आणि प्रज्ञान रोवर भायर सरतलो. प्रज्ञान रोवर जो आसा आमचो 14 दीस म्हणजे चंद्राचो तो एक दीस, बिकॉज चंद्राचे दीस वेगळो असता. सो 14 पृथ्वीचे दीस 14 डेज तो थंय कार्यरत आसतलो. तो ऑर्बिट करतलो आणि रिसर्च करतलो. यू विल बी सरप्राइज रोहित की तो कसलो रिसर्च करतलो खबर आसा? एक रिसर्च तो चंद्रार वचून सुर्याच्या करतलो. ओके, सुर्यांतल्यान कंटिन्युअसली एक हें येता सोलार विंड म्हणून ताजो एक घातक वायू असता. चार्ज पार्टिकल्स दे आर डेंजरस आणि अर्थार आमचे मॅग्नेटिक फील्ड आसा म्हणून एक एनवलोप आसा म्हणून तो भितर येना. पूण चंद्रार ना. सो चंद्रार तो डायरेक्ट येता. तो थंय सारको स्टडी जावूं शकता. ताजे इफेक्ट्स ताजे कितें आसा ते सगळे, ते हिलियम कितल्या प्रमाणाचेर चंद्राचे एटमॉस्फियरान एक्झोस्फियरान आसा हे सगळे एक रिसर्च जातलो. दुसरो एक आनीक इन्स्ट्रुमेंट आसा जो चंद्रा वयल्यान पृथ्वी स्टडी करतलो. ओके, पृथ्वी चंद्रा वयल्यान आमी स्टडी करतले आणि कितें स्टडी करतले यू विल बी सरप्राइज की एक प्लॅनेट आसा ज्याचेर जीव आसूं शकता, हॅबिटेबल प्लॅनेट, ताज्या बद्दलची सायन्स कशी असता ते आमी स्टडी करतले. आणि कित्याक पृथ्वी कित्याक स्टडी करप? बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टडींग फॉर एलियन्स. ओके, जर एक लिव्हिंग प्लॅनेट आसा आणि तो लिव्हिंग प्लॅनेट कसो बिहेव करता, सो हॅबिटेबल प्लॅनेट रिसर्च जेन्ना चंद्रा वयल्यान करता, पृथ्वीर रावन तूं पृथ्वीचो रिसर्च करूं शकना. भायर वचून तूं जेन्ना ऑब्झर्वेशन करता तेन्ना ती डेटा यूज करून तूं एक्झो प्लॅनेटरी सायन्स, एस्ट्रोबायोलॉजी हे सगळें करूंक शकतलो. सो इंडिया खूब फुडें वचपाची आसा, खूब फुडें वचपाची आसा. जस्ट वेट अँड वॉच की आतां कितें जातलें. आतां आमची फुडें नेक्स्ट जनरेशन विल बी व्हेरी हाय इन टू स्पेस. हांव तरी म्हणटा विकेंडार स्पेसाक वतलेत भुरगे आमचे. Oh, that's nice. आणि म्हाका दिसता गोंय सरकारान ताचें पावल म्हाका दिसता पयलीं उखल्लें, बिकॉज नाव गोवा गव्हर्मेंट हॅज इंट्रोड्यूस्ड एस्ट्रोनॉमी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर स्टँडर्ड 9 and 10. आणि हितूंतल्यान म्हाका दिसता ती एक्साइटमेंट जी आसा सगळ्यां मदीं ती डेफिनेटली फुडें सरतली. फुडें आदित्य मिशन वचपाचें आसा. सनाची स्टडी इंडिया करतले. कमिंग टू दॅट पॉयंट, बिकॉज सन तुवें म्हटलें की सनाक आमी ऑब्झर्व करपाचें आसा. आर वी हेडिंग टुवर्ड्स सन? येस, दॅट्स द आन्सर. It's very hot. How are we planning to go there? ना, सनाकडे वचचे ना. It will be in orbit around the planet only. आमच्या हायर ऑर्बिटानूच असून हांगच्यानूच ते स्टडी करतले. आता खुबशे आमचे सोहो म्हणून आसा अमेरिकाचे सोलार अँड हिलिओस्फियरिक ऑब्झर्वेटरी. एक्चुअली ते सनाकडे वचनात. सन इज ह्यूज इनफ टू गिव्ह लॉट ऑफ एनर्जी. सो पयशांनूय घाडू शकता. लायक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. म्हणजे आमचे हबल स्पेस टेलिस्कोप, खूप जेम्स वेब बी आसा. पण तांचे सगळे कितें आसा, दे ऑल कॅनॉट डायरेक्टली लुक एट द सन. दे आर नॉट मेड फॉर दॅट. दे आर व्हेरी, सन इज व्हेरी पॉवरफुल आणि हे डेलिकेट असता. सो डेडिकेटेड मिशन सनाक जाय पडटा. सोलार फिजिक्स, हिलिओफिजिक्स म्हणटा त्या खातीर. आणि सन स्टडी करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज सन आमचो सोर्स ऑफ लायफ आणि सन बरो बिहेव करना. सो सनाच्यान कंटिन्युअसली फ्लेअर्स भायर सरतात आणि कोरोनल मास इजेक्शन्स म्हणून इतली एनर्जी भायर सरतात की अर्थ ताजे जर वाटेर अनफॉर्च्युनेटली असली जाल्यार डिझास्टर जावपाक शकता. आमचे जे फ्लायट आसा तांचे सिग्नल्स वतात, सॅटेलायट कम्युनिकेशन ब्रेकडावन जाता, इलेक्ट्रिसिटी जे सप्लाय आसा ग्रीड ब्रेकडावन जाता. सो सन जितलो लायफ दिता तितलो लायफ वायप आउट करपाची क्षमता आसा सनान भितर. सो सन इज एन ऑब्जेक्ट विच यू कॅनॉट टेक फॉर ग्रांटेड. सुर्याक कंटिन्युअसली ऑब्झर्वेशन करून ताजे बद्दल स्टडीज, रिसर्च, डेटा आमकां कंटिन्युअसली मॉनिटर करचो पडटा. आणि म्हणजे फॉर सॅटेलायट्स, जेन्ना सॅटेलायट सोलार फ्लेअर सॅटेलायटीच्या डायरेक्शनान आयलो, एटलिस्ट यू कॅन शट देम डावन, कम्युनिकेशन शट डावन घेवं येता. सो आमी कितें तरी करूं शकता. सो नाव आदित्य मिशन इज वन ऑफ द मिशन्स. खूप कमी मिशन्स आसा सोलार मिशन्स. आमी इंडिया आतां तातूंत अचीव करता आदित्य मिशनान. फुडें चंद्रयान हांवें सांगलें 3, 4, 5 वचपाचें आसा. फुडें आसा. फुडें इंडोनॉट्स वतले, गगनयानान भितर वतले आणि खूप अशे इंडिया वॉन्ट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी हॅव अ ब्रायट फ्युचर. व्हेरी ब्रायट फ्युचर. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल इज जशें म्हणटा आमी, वी शूड नो थिंग्स विच आर अराउंड अँड वी शूड ऑल्सो ट्राय अँड एक्सप्लोर थिंग्स विच आर अननोन टू अस. And that is where ISRO and the Indian Space Research Program is heading into. Correct. Satish, तू आयज आमच्या मध्ये आयलो, इतकी माहिती दिली, बिकॉज
म्हाका दिसता खरेंच फ्रँकली आय डोंट नो अबाउट माय व्ह्युअर्स बट डेफिनेटली म्हाका बरीचशी गजाली कळ्ळी विथ रिस्पेक्ट टू चंद्रयान 3 एंड ऑल्सो द स्पेस रिसर्च प्रोग्राम दॅट वी हॅव हियर इन इंडिया. बेस्ट थिंग इज आवर यंगर जनरेशन इज इंटरेस्टेड. व्हेरी ट्रू. भुरगीं आमचे सगळे आमच्यापेक्षा चड ती आमकां सांगतात. दॅट इज द बेस्ट थिंग. आय एम ऑलवेज पॉझिटिव्ह की इंडिया विल नॉट बी अ डेव्हलपिंग कंट्री एनीमोर. वी विल बी डेव्हलप्ड फुल्ली डेव्हलप्ड आणि मी दुसऱ्या कंट्रीक वाट दाखयतले पुढे. ताकाच आमी विश्वगुरू म्हणतात. आय थिंक एज वी कम क्लोज टू 23rd of August, I think fingers crossed, Satish is 100% sure. I think we also are 100% sure that this time we will hit the moon and land softly and perfectly. I think तुम्ही obviously fingers crossed expect करा आणि तुमचे prayers असूनी till such time आम्ही ते अपडेट्स घेऊन पुढे तुमच्या मुखार येतलेत. पण तोपर्यंत पळत राहात प्रुडंट. हॅलो. बुधवारी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांसाठी आणि अर्थात भारतीयांसाठी सर्वात विक्रम लँडरला सॉफ्ट लँड करण्याचा प्रयत्न करून इतिहास रचण्यासाठी आता सज्ज आहे. सॉफ्ट लँडिंगच्या प्रवासाच्या शेवटच्या 20 मिनिटांचं नखशिखांत वर्णन म्हणजेच शेवटची 20 मिनिटं दहशतीची काळीच पिळवटून टाकणारी असतील आणि हे वर्णन केलं जाईल की जसं काही एखाद्या अटीतटीच्या क्रिकेट सामन्याची शेवटची ओव्हर. भव्य लिफ्ट ओव्हर नंतर इस्रोच्या बाहुबली रॉकेट मार्क 3नं चंद्रयान 3 अवकाशात पाठवलं. 1 ऑगस्ट रोजी चंद्रयान 3 त्याच्या 3.84 लाख किलोमीटर प्रवासात चंद्राच्या दिशेनं झेपावलं. 5 ऑगस्ट रोजी चंद्रयान 3 उपग्रहानं हळुवारपणे चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केला आणि स्थिरावलं. चंद्राच्या कक्षेत चंद्रयान 3 बरेच दिवस स्थिर होतं. चंद्रयान 3 लँडर मॉड्यूल लवकरच चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ 70 अंशावर उतरेल. भारतीय वेळेनुसार इस्रो 23 ऑगस्टच्या संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर चंद्रयान 3 लँडर मॉड्यूल चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाठवण्याची तयारी करेल. 14 जुलै रोजी श्रीहरिकोटा येथून उड्डाण केलेलं चंद्रयान 3 हे 40 दिवसांच्या प्रदीर्घ प्रवासानंतर चंद्राच्या पृष्ठभूमीवर उतरण्यासाठी आता सज्ज झालंय. पण त्याची उतरण्याची ही प्रक्रिया अतिशय नाजूक, किचकट आणि तितकीच घालमेल वाढवणारी आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हणजे चंद्रयान 3चा 40 दिवसांचा हा प्रवास एक टर्निंग पॉइंट असेल, तर लँडिंग दरम्यानची शेवटची 20 मिनिटं हा सुद्धा आणखी एक टर्निंग पॉइंट आहे. इस्रोचे माजी अध्यक्ष के सिवन यांच्या मते ही शेवटची 15 ते 20 मिनिटं धाकधुकीची असतील. चंद्रयान 3ला 20 मिनिटात सुरक्षित सॉफ्ट लँडिंग करावं लागेल. 2019 मध्ये चंद्रयान 2 त्याच्या प्रक्षेपणात लँडर मॉड्यूल चंद्रपृष्ठभागावर 2.1 किलोमीटर उंचीवर पोहोचलं, पण किरकोळ तांत्रिक बिघाडामुळे त्या प्रक्रियेत अपयश आलं. इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथन म्हणालेत की चंद्रयान 3 त्याच्या लँडर मॉड्यूल सोबत असा अपघात टाळण्यासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत आणि अगदी लहान त्रुटींच्या बाबतीतही शास्त्रज्ञांनी काम केलंय. चंद्रावर उतरणं हे पृथ्वीवर उतरण्यासारखं नाहीये. आपल्याला एखादं विमान किंवा वस्तू पृथ्वीवर उतरताना दिसते. विमान उंचीवरून हळूहळू पुढे आणि खाली सरकतं आणि धावपट्टीवरून उतरतं. विमानातून उडी मारणारे स्कायडायव्हर्स पॅराशूटच्या सहाय्यानं सुरक्षितपणे जमिनीवर उतरतात. पृथ्वीवर शक्य असलेल्या या दोन्ही प्रक्रिया चंद्रावर शक्य होत नाहीत. याचं कारण म्हणजे चंद्रावर वायुमंडल म्हणजेच हवा नाहीये. त्यामुळे हवेत उडून किंवा पॅराशूटच्या सहाय्यानं लँडर उतरवणं शक्य होत नाही. त्यामुळे न्यूटनच्या गतीच्या 3ऱ्या नियमानुसार लँडर चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरला पाहिजे. म्हणजे चंद्रयान 3च्या लँडरमध्ये रॉकेट बसवण्यात आलंय. त्यांना प्रज्वलित करून लँडरचा वेग नियंत्रित करून मंद गतीनं सॉफ्ट लँडिंगचा प्रयत्न करेल. या दरम्यान खरी समस्या काय, तर लाखो मैल दूर असलेल्या मंगळयानावरही पृथ्वीवरील डीप स्पेस नेटवर्कद्वारे जे बँगलोरमध्ये आहे तेथील शास्त्रज्ञांचं त्याच्यावर नियंत्रण आहे. चंद्रयान 3नं उड्डाण केल्यापासून त्याचा चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्याचा प्रवास सुरू होईपर्यंत शास्त्रज्ञांनी त्याची दिशा, वेग नियंत्रित केला आहे आणि त्याचे बूस्टर प्रज्वलित केले. पण लँडिंग दरम्यान ते अशाच प्रकारे नियंत्रित केले जाऊ शकत नाही. म्हणूनच त्याला स्वयंचलितपणे उतरता यावं त्या पद्धतीनं तसं प्रोग्रामिंग केलेलं असतं. चंद्रयान 2 मध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली होती, पण शेवटच्या क्षणी तांत्रिक बिघाडामुळे क्रॅश झालं. अशा समस्या टाळण्यासाठी यात
चंद्रयान 3 मध्ये व्यवस्था करण्यात आल्याचं इस्रोच्या अध्यक्षांनी म्हटलंय. चंद्रयान 3चं सॉफ्ट लँडिंगची प्रक्रिया काय आहे ते आपण पाहूयात. चंद्रयान 3 लँडर लंबवर्तुळाकारात कक्षेत चंद्राभोवती फिरत आहे. चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 100 किलोमीटर अंतर पार केल्यानंतर गुरुत्वाकर्षणाच्या जोरावर त्याच्या बूस्टरला प्रज्वलित केलं जातं. परिणामी ते चंद्राच्या पृष्ठभागावर वेगानं घसरू लागतं. ते पडत असताना त्याचा वेग खूप जास्त असतो. पृथ्वीवरून चंद्रावर रेडिओ सिग्नल पाठवण्यासाठी जवळपास 1.3 सेकंद लागतात. त्याच सिग्नलला पुन्हा जमिनीवर पाठवण्यासाठी 1.3 सेकंद लागतात. म्हणजेच ते पूर्ण होण्यासाठी जवळपास 2.5 सेकंद लागतात. म्हणजे ताशी 100 किलोमीटर वेगानं चंद्रावर पडणाऱ्या लँडरला नियंत्रित करण्यासाठी 2.5 सेकंद लागतात. त्यामुळे हे काही व्यावहारिक काम नाहीये. म्हणूनच लँडर स्वतः निर्णय घेतो आणि खाली उतरतो. अशा प्रयत्नांमध्ये सर्व काही तांत्रिकदृष्ट्या योग्यच असलं पाहिजे, नाहीतर अगदी लहान कारणामुळे अडचण निर्माण होऊ शकते. चंद्रयान 3च्या सॉफ्ट लँडिंग दरम्यानचे प्रमुख 8 टप्पे आहेत. ते 8 टप्पे कोणते ते आपण पाहूयात. चंद्रयान 3 प्रथम चंद्राच्या पृष्ठभागावर झेप घेण्यासाठी बूस्ट फायर करून 100 किलोमीटर उंचीवर परिभ्रमण करतं. तिथून ते वेगानं चंद्राच्या भूपृष्ठावर येतं. या प्रक्रियेत लँडर मॉड्यूल लँडिंग करत असताना चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या 90 अंशाच्या कोनात असलं पाहिजे. चंद्रयान 3चे 4 पाय कितीही झुकले तरी ते चंद्राच्या पृष्ठभागाला स्पर्श करू शकत नाहीत. यानंतर धोका आहे तो चंद्रयान 3 उलटे पडण्याचा. असं झालं तर रोवर त्यातून बाहेर पडू शकणार नाही. चंद्राच्या पृष्ठभागावर सॉफ्ट लँडिंग केल्यानंतर लँडर मॉड्यूल पृथ्वीला सिग्नल पाठवतो. थोड्या वेळानं त्याला बसवलेला रॅम्प उघडतो. याद्वारे रोवर चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरेल आणि तिथून छायाचित्रे घेऊन बँगलोर जवळील इंडियन डीप स्पेस नेटवर्कला पाठवेल. सायंटिफिक स्पेस ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर टी.व्ही. व्यंकटेश्वरन यांनी म्हटलंय की 100 किलोमीटर उंचीवरून लँडरला चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्याची 15 मिनिटांची प्रक्रिया 8 टप्प्यात पूर्ण केली जाईल. पहिला टप्पा. यामध्ये त्याचे पाय चंद्राच्या पृष्ठभागावर तोपर्यंत राहतील जोवर 100 किलोमीटरपासून 30 किलोमीटरपर्यंत खाली येत नाही. त्यानंतर वेग आणखी कमी करण्यासाठी लँडरवरील रॉकेट प्रज्वलित केले जाईल. लँडर 30 किलोमीटर उंचीवर असताना त्याचा वेग खूप जास्त असतो. तो वेग नियंत्रित करत तो चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 7.4 किलोमीटर उंचीवर पोहोचतो. 100 किलोमीटर उंचीवरून इथपर्यंत पोहोचायला त्याला 10 मिनिटं लागतात. ही झाली पहिली पायरी. दुसऱ्या टप्प्यापासून खऱ्या अर्थानं कसोटीला सुरुवात होते आणि तिथून सर्व काही आव्हानात्मक. 7.4 किलोमीटर उंचीवरून ते 6.8 किलोमीटर उंचीवर उतरतं. तोपर्यंत लँडरचे पाय चंद्राच्या पृष्ठभागावर 50 अंशापर्यंत फिरतील. त्यानंतर त्याला ज्या ठिकाणी उतरायचं आहे तिथे तो जात आहे की नाही याची पुष्टी लँडरवरील उपकरण करतील. तिसरा टप्पा म्हणजे 6.8 किलोमीटर उंचीवरून 800 मीटर उंचीवर उतरणे हा आहे. चौथ्या टप्प्यात 150 मीटर उंचीवर उतरतं. या उंचीवर लँडर हे लँडिंग साईट पूर्णपणे समतल असल्याची खात्री करेल. 5व्या टप्प्यात 150 मीटरवरून ते 60 मीटरपर्यंत खाली उतरतं. तिथून लँडरचा वेग आणखी कमी होतो. 6व्या टप्प्यात उंची 60 मीटरवरून 10 मीटरपर्यंत कमी होते. यावेळेला इस्रोनं लँडरमध्ये लेझर डॉपलर व्हेलोसिमीटर नावाचे एक नवीन उपकरण जोडलेलं आहे, जे चंद्राच्या पृष्ठभागावर लेझर पल्स पाठवतं. हे उपकरण लँडर किती वेगानं खाली जात आहे ते क्षणाक्षणाला मोजत असतं. लँडरमधील संगणक आवश्यक वेगानं लँडिंगची काळजी घेतो. 6वा टप्पा म्हणजे लँडर 60 मीटर उंचीपासून 10 मीटर उंचीवर आणणं हा आहे. 7वा टप्पा चंद्रावर लँडरचे 10 मीटर उंचीवरून सॉफ्ट लँडिंग करणं हा आहे. या टप्प्यावर रॉकेट ज्वलन थांबवतं, कारण ज्वलनातून रॉकेटची धूळ चंद्राच्या पृष्ठभागावर उडून लँडरवरील सोलर पॅनलवर पडली तर वीज निर्मिती करू शकणार नाही, असा धोका निर्माण होऊ शकतो. 8वा टप्पा आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा. 10 मीटर उंचीवरून खाली पडताना लँडर मॉड्यूलचा वेग 10 मीटर प्रति सेकंद असतो. म्हणजे शेवटचा टप्पा हा 1 सेकंदात पूर्ण होतो. जरी तांत्रिक त्रुट उद्भवली आणि लँडर 100 मीटर प्रति सेकंद वेगानं खाली पडला तरीही उपकरणाचे पाय अबाधित राहतील. त्यासाठी त्याला इतकं मजबूत बनवण्यात आलेलं आहे. लँडरला 800 मीटर उंचीवरून 10 मीटर उंची गाठण्यासाठी 4.5 मिनिटं लागतात. यानंतर लँडर सुरक्षितपणे उतरल्यानंतर रॅम्प उघडतो. रोवर बाहेर येतो आणि चंद्रावर उतरतो. तो लँडरची छायाचित्रे घेतो आणि पृथ्वीवर पाठवतो. हा 8वा टप्पा. इथून विक्रम लँडर आणि रोवर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर 14 दिवस संशोधन करणार आहे.
चंद्रयान-3च्या सॉफ्ट लँडिंगच्या संदर्भातील 8 महत्त्वाचे टप्पे तुम्हाला कसे वाटले हे नक्की कळवा. बघत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. Well, it's not always that we end up creating history, but today might be the day, the moment when India creates history. आणि म्हाका दिसता आमी सगळे जाण एक्सायटेड आसा टुवर्ड्स द जावन 4 मिनटाचो मुहूर्त काडला. त्या टायमार कळटले वेदर वी हॅव एंडेड अप बिकमिंग सक्सेसफुल इन लँडिंग द साऊथ पोल ऑफ द मून अँड एक्सप्लोरिंग वॉट हॅज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड. म्हाका दिसता उलोवपाक खूब आसा आनी म्हाका दिसता एक्सायटमेंट म्हाज्या मदीं खूब आसा, तुमच्या मदीं खूब आसतलें, एन्थुजियाजम खूब आसतलें, तुमचे प्रश्नय खूब आसतले. हे सगळे जाणून घेवपाक आनी हे सगळे लायव्ह मुवमेंट आमी पळयतले रायट फ्रॉम द लँडिंग फेज ऑफ द एंटायर थिंग वीच वील गेट द फीड फ्रॉम इस्रो अँड ऑल दीस अदर प्लॅटफॉर्म्स. थंयच्यान आमी ते सगळे घेतले. बट हे सगळें डिस्कशन करपाक आनी चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 कितें, चंद्रयान-1 कितें, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम हो कितें, फुडार कितें, हे सगळें जाणून घेवपाक आयज म्हाज्या बरोबर एक अशे एक्सपर्ट आसा जे म्हाका आय एम रियली फॉर्च्युनेट टू हॅव हिम इन द स्टुडिओ ऑफ प्रुडंट. ते म्हळ्यार दोतोर विठ्ठल तिळवे जे स्वता आसा एस्ट्रॉनॉमर. सर, वेलकम टू द स्टुडिओ. आय कॅन सी यू विथ द स्माईल अँड दॅट स्माईल सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. म्हाका दिसता हाव enthusiastic, how excited are you for this Chandrayaan-3? So Chandrayaan-3 जर सॉफ्ट लँड जालें न्ही, it is not only for India, because that knowledge what we will gain from Chandrayaan-3 that will go in the textbooks. Oh, that's nice. आणि त्याच्यान बरें आनी काय जावपाक शकना, because we will generate that knowledge for entire future generation. So Chandrayaan-3 soft landing is only one part of that, and we will be there for now creation of new knowledge. आणि ती नॉलेज साऊथ पोल ऑफ मुनाचेर अजून पयलीं कोणी काडिल्ली ना. सो टेक्नॉलॉजिकल डेमॉन्स्ट्रेशन इज वन थिंग, बट द नॉलेज दॅट वी विल गेन फ्रॉम दीस मिशन that would be invaluable for us. ओके, हांव एक बरेचदा प्रश्न विचारता बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड द लायव्ह स्ट्रिमींग आनी ताजेर म्हाका असे कपल ऑफ प्रश्न आसा की अरे बाबा चंद्राचेर तुमी कित्याक वयता, अर्था भायर कित्याक एक्सप्लोरेशन करता. हांवें ते दिसा एक एन्थुजियास्टीक मनशाकूय विचारलें विच इज सतीश नायक, ताजे हांवें फीडबॅक घेतलो. हांव तुमकांय विचारता बिकॉज यू हॅव प्लेड अ व्हेरी इंटेग्रल रोल इन टर्म्स ऑफ स्पेस रिसर्च प्रोग्राम. तुमी कोलॅबरेशनूय केला नासा सारख्या संस्थे बरोबर. कित्याक गरज आसा चंद्रार वचपाची? हांगासरूच करुया न्हू कितें करपाचें. करेक्ट. सो जस्टिफिकेशन आमी खूब तरेन दिवपाक शकता. नाव द मेन जस्टिफिकेशन, फॉर एक्झाम्पल, आतां जर इकॉनॉमिक्स ऑफ एनी कंट्री जर आमी पळयली, फॉर एक्झाम्पल अमेरिका जी आतां आमी पळयता, मायक्रोसॉफ्ट धरया, एपल धरया, आनी तेंचे जे फाउंडर फॉर एक्झाम्पल बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ते जेन्ना 1969 अपोलो 11 जेन्ना लॉन्च जाले, सो देर अपोलो 11 दे वर ऑल इन देअर mid-20s. आणि ऑलमोस्ट एव्हरी वीक नवीन न्यूज, दॅट मीन्स न्यू इन्व्हेन्शन, न्यू डिस्कवरीज यूज टू कम इन द मिडिया. ओके. आणि त्यांचो जर आउटपुट पळयलो न्ही, ते 30 ते 40 वर्सां नंतर यू कॅन सी द इनोव्हेशन. सो इट इज नॉट अ कोइन्सिडन्स दॅट अमेरिका बिकेम डेव्हलप वॉट इट इज टुडे. सिलिकॉन व्हॅली फॉर एक्झाम्पल, इनोव्हेशन that became the part of their culture. आणि हे कित्याक के सभी लूनर मिशंस की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे. जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था. चंद्रयान-1 चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है. यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं. अगर हम बात करें चंद्रयान-2 की, जो इसरो का दूसरा मून मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था. और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है. मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान-2 काफ़ी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा. अब तक चंद्रयान-2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है. इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड
OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान। नमस्कार। इसरो के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेठ के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हाँ, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक से देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan 3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी
धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूँ तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने अब पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान-2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान-2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान-2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान-3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स Chandrayaan-3, the follow-up mission of Chandrayaan-2, which has been designed to accomplish our mission goals. The primary objective of Chandrayaan-3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface. This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान-3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा।
LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेग मान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further that is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके।
इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, एलएचबीसी, एलडीवी और एलएचडैक का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। एलडीवी, जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer, or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase.
जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आइडिएशन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at his track are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आइडिएशन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package, LIRAP, is aiding in the navigation.
जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers during the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरयूसीसी अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down
and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ,
हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा।
We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल
अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स,
On this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you, Adranaya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. Thank you, sir. Hello. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO IR management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and IR ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched,
after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail, but so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of
comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. A very convenient, comfortable and easy landing. That is what we saw on television. Sir, तुम्ही म्हटले पळयताना it looked very easy. How difficult, how challenging it was? Yeah, so although आमकां जे दिसता पळय easy म्हणून, it was very very smooth. Correct. Without any perfect to the timings. पुणून from 2019 onwards जी फाटली 4 वर्सां जर पळयली न्ही, and that is only possible because of that. Correct. So in fact हे फावटी इतले रिडंडंट सिस्टम असले. रिडंडंट म्हणजे एक जर फेल गेलो दुसरो जर फेल गेलो तिसरो. 11 कॅमेरा सिस्टम्स वर देर, 9 एंटेनास फॉर कम्युनिकेशन्स. सो इवन बिफोर लँडिंग न्ही इतली बॅकअप जे असले पळय, फुल प्रूफ, या ऑलमोस्ट. सो इट्स कॉल्ड फेल सेफ कायंड ऑफ लँडिंग. इतले सिस्टम्स तयार केल्ल्यो रिडंडंट सिस्टम. सो इट वॉज ऑलमोस्ट त्या खातीर चेअरमॅन म्हणटाले, इस्रोचे चेअरमॅन, की कितेंय जरी फेल जालें हे फावट, इट्स ऑलमोस्ट गॅरंटेड दॅट इट वील सॉफ्ट लँड. आनी इतले प्रिकॉशन घेतलें. हावेवर इट टूक 4 years फॉर अस. आनी 4 years द रिजन इज आमचे कडेन चंद्रयान 2 कडल्यान खुबसो डेटा ऑलरेडी येयल्लो आनी तेजे वयल्यान इतलें शिकपाक मेळ्ळें की ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट इट इज पॉसिबल. अदरवायज यू नो फर्स्ट टायम लँडिंग आमकां जरी दिसलें न्ही फर्स्ट टायम लँडिंग 100% सक्सेसफूल जावचें जालें जाल्यार इट इज यू नो आयडियल. ओके, आय इंटरप्ट युअर बिकॉज आमकां CM सद्या लायव्ह मेळटा. विल स्विच टू द चीफ मिनिस्टर. कोणीच सॉफ्ट लँडिंग अशा पद्दतीन करूं नाशिल्लें, त्या खातीर तें चड म्हत्वाचें आशिल्लें. ओके, आज तुमी म्हटलां ती गोंयची कंपनी हातून म्हणटा तशी आसली कॅनेको. समेस्त गोंयकारा खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा की कॅनेको सारकेल्या कंपनीचो हितून मॅन्युफॅक्चरींग जे चंद्रयान 3 खातीर जे वेगवेगळे डिफरंट पार्ट्स लागताले ती एकमेव गोंयची कंपनी. तितूर तेंच्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंगान तेंच्यांनी वांटो घेतलो. तेजे वेगवेगळे डिफरंट पार्ट्स हे कॅनेको कंपनीत मॅन्युफॅक्चर केले. तुमचे कितें अपील भुरगे आयले तांकां
म्हणजे समेस्त सगळ्या भुरग्यांक हांव अपील करता, गोंयच्या वेगवेगळ्या सायंटिस्टांक अपील करता की हे फावटी जर आमी मॅन्युफॅक्चरिंगान भाग घेवपाक शकली गोंयची कंपनीज आसत जाल्यार वाय नॉट नेक्स्ट टायम जेन्ना चंद्रयान वतले किंवा गगनयान वतले त्या गगनयान आमचो कोंकणी गोंयकार सायंटिस्टूय भितर पार्टिसिपेट जावचो, त्या दृश्टीन तांच्यांनी काम करचें. गोंयांत आशिल्ले अशा पद्दतीची वेगवेगळी रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा. पोलार इन्स्टिट्यूट एट वास्को, ICR एट द ओल्ड गोवा एंड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी एट दोना पावला. ही रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा. हातूंत वेगवेगळ्या पद्दतीचे रिसर्च करचे, युनिव्हर्सिटी लेवलाचेर वेगवेगळे रिसर्च जाता, तातूंत तांच्यांनी वांटेकारी तुम्ही जावचें. इवन ती 5 लाखाची आमची मनोहर पर्रीकर सायंटिस्ट अवॉर्ड ही स्कीम आमच्या सायन्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन आसा. आमी यंग सायंटिस्टा खातीर सातत्यान अवॉर्ड दिता, त्या खातीर अशा पद्दतीचो तांच्यांनी अवॉर्ड घेवपा खातीर प्रयत्न करता. तुमकां मातशी धाकधूक आशिल्ली सर, सगळ्यांकूच आशिल्ली. डेफिनेटली, बट सगळे जाण सामके सायंटिस्ट पळयताले तसो देशवासीय पळयताले, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर पळयताले, त्या खातीर म्हणजे अशा पद्दतीन खूब. बट आवर सायंटिस्ट वेर कॉन्फिडंट आशिल्ले की सॉफ्ट लँडिंग करतलेच. सारको टायमिंग 6:04 सांगिल्लो सर. वेल मातशी धाकधूक असली काय विचारले आमी, तर सगळ्याकूच असली, देशा बरोबर म्हाका दिसता तांकांय असली, सगळ्याक. आणि आय थिंक एंटायर ह्युमन कायंड, मॅनकायंडाक सगळ्यांक धाकधूक असली की दॅट इज अनदर स्टेप टू द मून. आय थिंक विक्रम चंद्रार पावलो आणि म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक आनी म्हाका देशभराक म्हाका दिसता देव पावलो. सर, मुख्यमंत्र्यान एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल उलयली की यंग सायंटिस्ट ते प्रमोट करपाक सोदता. गोंयांत तसो एक ताका कल्चर आमच्या मदीं ना, बट तो आतां हळू चेंज जाता. अगेन देर इज अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. आयज टेक्नॉलॉजी आयल्या आमच्या कडेन. गव्हर्मेंट सुद्दां इनिशिएट करता अशें कांयचे ऑल दीस talent should be pushed ahead so that we can go to moon and further galaxies. तुम्ही ह्या स्टेटमेंटाकडे कशे पळयता आणि हाऊ डू यू सी गोवा एज अ केस स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू एम्बिशन ऑफ एक्सप्लोरिंग स्पेस? सो डेफिनेटली आमी जर खंयची कंट्रीची बॅकग्रावंड पळयलो न्ही, ऑल डेव्हलप कंट्रीज, जपान धर, अमेरिका धर, ऑर एनी अदर डेव्हलप कंट्रीज, दे आर डेव्हलप्ड ओनली बिकॉज ऑफ दे हॅव व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग रिसर्च कल्चर, इनोव्हेशन कल्चर आणि रिसर्च कल्चर. इन फॅक्ट इंडिया इज नॉट टू डिफरंट. आम्ही जर फॉर एक्झाम्पल आमची जर नालंदा युनिव्हर्सिटी पळयली न्ही, वी वर एबल टू डेव्हलप लॉट ऑफ थिंग्स ओनली बिकॉज दे हॅड व्हेरी स्ट्रॉंग रिसर्च कल्चर. आणि इट इज नॉट अ कोइन्सिडन्स की वाय झिरो वॉज इन्व्हेंटेड इन इंडिया, वाय योगा वॉज इन्व्हेंटेड इन इंडिया. इट इज नॉट अ कोइन्सिडन्स. But it had lot of devoted and focused time, energy, आणि ती पॉसिबल आसा ओनली इट्स बिकॉज ऑफ रिसर्च. गोंयान सध्या इनफॅक्ट आय स्टार्टेड एट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, दॅट इज वेर आय स्टार्टेड रियल रिसर्च. 2-3 रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स आणि खरोच these are very good places to start research, which we have in Goa. Of course now it is our requirement. आमकां जर नॉलेज हब करपा जाय आनी चीफ मिनिस्टराची तशें हें आसा की नॉलेज हब जर करपा जाय आमकां, जाल्यार दॅट वी रियली रिक्वायर्ड, वी रियली हॅव टू पुश इट. वी आर गोईंग इन दॅट डिरेक्शन, वी हॅव टू एक्सेलरेट. आनी ताका मातशी पुश जर मेळ्ळी न्ही, देर इज नो अदर रिझन वाय वी कॅनॉट अचीव इट. आय थिंक टॅलंट आसा तो ग्रूम करपाक जाय. आनी मोर इम्पॉर्टंटली आनी एक मुख्यमंत्र्यान मेन्शन केलें की देर आर अदर प्रायवेट कंपनीज वीच वर वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट. L&T इज वन, गोदरेज इज अनदर वन, किनेको इज गोवन कंपनी. आय थिंक आमच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांक अभिमानाची गजाल की गोंयची कंपनी वॉज पार्ट ऑफ दिस इंटेग्रल मिशन, विच इज अ सक्सेसफुल मिशन. आणि इनफॅक्ट दी अदर थिंग दॅट इज हॅपनिंग की इस्रोनी आता ओपन केला फॉर प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज. वाय इट इज रियली रिक्वायर्ड की इस्रो कॅनॉट डू इट अलोन. आणि जेन्ना प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन जाता न्ही, इट इज नॉट जस्ट प्रायव्हेट कंपनीज, मॅनपॉवर जी तयार जाता पळय थ्रू प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज, दॅट जी आमचे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आसा दॅट पर्कोलेट्स डावन, आणि दॅट विल रियली डेव्हलप अवर ह्युमन रिसोर्स आहा ते ऑल ओवर द नेशन. आणि एक गजाल इज वी हॅड सतीश लाईव्ह फ्रॉम पब्लिक एस्ट्रॉनॉमी, आणि सतीश इज अ ह्यूज फॅन ऑफ एस्ट्रॉनॉमी. आय वॉज वंडरिंग की तो खंयच्या तरी एस्ट्रॉनॉटाचे बीन टी शर्ट घालता, बट ही वॉज वेरिंग अ बॅटमॅन टी शर्ट. जोक्स अपार्ट,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हटली की स्काय इज नॉट द लिमिट, आणि त्यांच्यानी एक क्यू सुद्धा दिला विच वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन, दॅट इज आदित्य L1, गगनयान इज अनादर वन, आणि शुक्र इज अनादर थिंग. सो दिस आर द फ्रंटियर्स दॅट हॅव ओपन्ड, अँड विथ एव्हरी सक्सेसफुल मिशन आय थिंक तो कॉन्फिडन्स सरकाराचोय वाटता आणि म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युएंट्सांचो सुद्धा वाटता. सो यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द टीम्स. Great time to be alive, great time for the future, great time for the kids, because they are the future of our nation. सो डेफिनेटली, आणि जर भुरग्यांचे कमेंट्स जर पळयले न्ही, सो दे हॅव दॅट इमोशनल अटॅचमेंट नाव, आनी दॅट इज रियली रियली रिक्वायर्ड. जर कितें जर आमकां करपा जाय न्ही बरें, वी शूड हॅव दॅट अटॅचमेंट, आनी तो जर अटॅचमेंट आहा, वेदर इट इज टुवर्ड्स रिसर्च, वेदर इट इज टुवर्ड्स इंस्टिट्यूशन, वेदर इट इज टुवर्ड्स स्टेट, तो जर अटॅचमेंट आसा, देन देर इज नो रिजन वाय वी कॅनॉट अचीव इट. स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर शुअर, इंडिया वील हॅव अ lunar base at some point, and that will happen sooner than later. That is for sure. Chandrayaan 3 successful zale, so now we have the technology to go land, and the next step is really to have that base on moon. Ekda ती केली नी, then there is absolutely no limit. We really do not have all the information about minerals कसले चंद्राचेर आसा. For example, चंद्राचेर आता जो चंद्रयान 3 इन्स्ट्रुमेंट आसा, इट कॅन लूक बॅक ऑन अर्थ, आणि तो भायल्यान जर खंयचो हॅबिटेबल प्लॅनेट जर आसा, खंयच्या प्लॅनेटाचेर जर लायफ आसा, त्या प्लॅनेटाची सिग्नेचर कशी आसतली ती आमी चंद्रा वयल्यान पळोवपाक शकता. आतां दॅट इन्स्ट्रुमेंट इज देर ऑन चंद्रयान 3. आणि सर बाकीच्या खंयच्या प्लॅनेटाचेर जर आमकां काडपा जाय, तर लायफ आसा जावं आनी कितें, इवन मायक्रो ऑर्गेनिजम, तेंची सिग्नेचर कितें आसतली, एटमॉस्फियरान सिग्नेचर कितें आसतली, ती आमकां चंद्रयान 3 वयल्यान जर कळ्ळी, पृथ्वी वयल्यान कशी दिसता ती, वी वील हॅव सम क्लूज फ्रॉम अदर प्लॅनेट्स वेदर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लायफ on other planets. Okay. And it is not a small thing to achieve that. I mean, this was just a sort of imagination few decades back. But now it has become a reality. So entire, all the countries now, entire globe is looking at India. Absolutely. And it is a proud movement. म्हाका दिसता ते सगळ्यांनी आमी म्हाका दिसता प्रत्येक प्रायम मिनिस्टर जेन्ना उलयलो तेन्ना आमी पळयलें, चेअरमॅन इस्रो उलयलो तेन्ना आमी पळयलें, मुख्यमंत्री उलयलो तेन्ना पळयलें, आनी आय थिंक ही वॉज सराउंडेड विथ क्वायट एनर्जाइज्ड भुरगीं आसलीं थंयसर, आनी आय थिंक इट्स अ क्वायट कमेंडेबल फीट दॅट वी हॅव अचीव्ड. आतां इफ आय वॉन्ट टू आस्क यू इज, आतां विक्रम इज सक्सेसफुली लँडेड, what happens after this? So what is the time zone, what is the time phase, when is the rover coming, Pragya rover is coming, how does that rover look at moon now? So usually the sequence is, आता त्यांचे एकदा स्टेबल जाले, लँडर जसो स्टेबल जालो. सर हांव तुमकां इंटरप्ट करता बिकॉज वी हॅव द, आमी भुरग्यांचेच उलयता, भुरग्यांचे फ्युचर उलयता, बिकॉज वी हॅव डायरेक्टर शैलेश जिंगडे लायव्ह आसा आमच्या बरोबर. विल स्विच टू डायरेक्टर एड्युकेशन. तो भी आसा त्यो बऱ्या सेंटरांनी, फॉर एग्जाम्पल NIO और वास्को एक सेंटर आसा हांगा व्हरचें, आनी त्या पद्दतीचेर सर्कुलरी स्कुलांनी करतले. ओके. आनी दुसरें म्हणजे कितें जाला तें तरी म्हाका चंद्रयाना बद्दल एक लेसनाल करिक्युलमान कितें घालचें अशें दिसता तुमकां? अशे खुबश्यो गोश्टी जातल्यो, सगळ्योच गोश्टी काय अश्यो रोखड्योच करिक्युलमान घालपाक जायना. मेन म्हणल्यार आमी करिक्युलम जो फॉलो करता तो आमचो NCERTचो करिक्युलम, आनी NCERTन जर हो लेसन घालो जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमच्या स्कुलांनी तो शिकप जातलें. पूण जी आमी NCERTची पुस्तकां घेता तातूंत आमी कितेंय घालप हें तितलें इजी ना. कित्याक आमी गोंयचे पासून कितेंय कंपोनंट घालपाचें जालें जाल्यार NCERTचें आमकां परमिशन घेवचें पडटा, कित्याक ताचेर कॉपीरायट आसता. सो जर NCERTन जर हें घेतलें एक लेसन और थोडो घालप जाल्यार भुरग्यांक शिकप जातलें. पूण आमी वेगळ्या वेगळ्या तरेन भुरग्यां पर्यंत हें पावोवपाचे प्रयत्न करतलेच. एक म्हणल्यार पिकनिको और बाकीचे अवेरनेस. आतां हे येदे व्हडले अचिवमेंट आसा आमच्या देशाचो आनी सायंटिस्टाचो, आमी स्कुलान भयंकर कवरेज दितले वेगळ्या वेगळ्या तरेन. थँक्यू सर. ओके, हे आसले डायरेक्टर एड्युकेशन. हांव परत तुमकां प्रश्न तोच विचारता की वॉट हॅपन्स नाव द मुमेंट विक्रम इज लँडेड सॉफ्टली,
Pragya rover is expected to come at any moment. I believe now, the process has already started. How does things move henceforth? Yeah. So Pragyan rover जसं भायर येलो, so the first thing is it has to actually row. That means it has to really walk on the surface of the moon. That is the first time India is really doing the test. Field testing जी म्हणता. पृथ्वीचेर of course we have done those tests, but we have never experienced what kind of environment it will be there. So this is really the field test. So एकदा भायर येलो म्हणटकूच it has lot of scientific payloads जे आसा आमकां science आतां करपा जाय. So soft landing we have demonstrated that we are capable of doing soft landing. जो science part आसा and it has lot of science payloads. एक जो main म्हणटा तो सेस्मोलॉजी. चंद्राचेर फॉर एग्जाम्पल क्वेक्स, अर्थक्वेक्स जशे पृथ्वीचेर जाता तशे चंद्राचेर लुनार क्वेक्स ते जर आमकां स्टडी करपा जाय जाल्यार ताका सेस्मोलॉजी इंस्ट्रुमेंट आसा. Then it has another instrument which can drill hole, it can go inside and it can see soilची density कितली आसा. एक 10 सेंटीमीटर सुमार भितर वचून इट कॅन डू टेम्परेचर कितली जावं सॉयलाची डेन्सिटी कितली तेजे वयल्यान आमकां कळटा की वॉट कायंड ऑफ मिनरल्स आर प्रेझेंट. एंड वी एक्सपेक्ट चडसो मिनरल ऑन द सर्फेस आसा तो सिलिकॉन डायऑक्सायड, फॉर एग्जाम्पल सिलिका, आमची जशी सँड आसता बिचार तशी. पुणून लॉट ऑफ अदर मिनरल्स आर ऑल्सो देर, टायटेनियम फॉर एग्जाम्पल. सो some of the minerals that may not be available on earth that may be available on moon. आणि ह्यान पयलीं साउथ पोलाचेर कोणी अजून ते एक्सप्लोरेशन केल्लें ना. चडशे जे एक्सप्लोरेशन आसा ते अलॉंग द इक्वेटर ऑफ द मून. सो साउथ पोलाचेर ऑल्दो इक्वेटराचेर आमकां थोडे इन्फॉर्मेशन आसा. साउथ पोलाचेर मे बी डिफरंट टायप्स ऑफ मटेरियल मायट बी देर. लायट सनलायट चड पावना थंय आनी ऑफकोर्स हाव इट हॅज फॉर्म आणि ते इन्फॉर्मेशन वी वील गेट फॉर द फर्स्ट टायम. आणि ते जर इन्फॉर्मेशन इफ वी गेट, that information will go in the textbook which our next generation will really, this is possible only because of Chandrayaan 3. Okay, we will switch to a little western media जे आसा तांच्यांनी सकाळच्यान आमकां कसो इंटरप्रेट केल्लो. We have couple of western media quotes, that headlines that we had seen. And I am really excited to see tomorrow's headlines also, because that's something that we will all like to celebrate. Because Western people, when they look at us, it's always a different perspective altogether. तुम्ही कशें म्हटलें की चंद्रावयरच्यान आतां पृथ्वी पळयतालो, ऑब्वियसली तो पर्स्पेक्टिव्ह वेगळो आसता. सो इफ आय कॅन हॅव सम ऑफ द वेस्टर्न मिडियाज जांच्यांनी आयज सकाळच्यान आमकां ट्रॅक केल्लें विथ रिस्पेक्ट टू चंद्रयान 3 and ओके, we will take those slides, but अगेन तुम्ही म्हटलें की आतां हें सगळें एक्सप्लोरेशन जातलें, टेक्स्टबुकाचेर ते सगळ्यो गजाली आतां वयतल्यो. यू ऑल्सो मेन्शन विथ रिस्पेक्ट टू फायंडींग मून, वॉटर ऑन मून, देर आर चान्सेस दॅट this looks like an entire sci-fi movie, which is maybe couple of years back not possible, or maybe a delusional asle, but I think today it seems a little realistic. Reality. I think we all feel like James Cameron now. Correct. It has really become, and students can feel it. It has become the reality. And reality, it's not just going to the moon and space exploration. Because I have involved in many projects. Some of the projects are executed by NASA. And given my experience, गोयच्यान जर हांव करपाक शकता, and it is only now we give the access to those kind of facility. Correct. That means our students are capable. Given the access, they will definitely be able to do that kind of exploration. So okay, before moving to the next question, I'd like to see how the Western media has been looking at us. First of all, can we have the slides now? This is the New York Times, which says racing to land or crash on the moon, and we have successfully landed, softly landed. If we can have the next slide, which says Al Jazeera, Chandrayaan 3 historic India mission for moon's south pole set for landing. Again, I think I'm all excited to see the tomorrow's headlines. Next. The Guardian says India prepares for Chandrayaan 3 attempt to land on the moon. And the last final one we'll see. The BBC, Chandrayaan 3, India's moon lander Vikram aims for historic lunar South Pole landing. And I think it says it all. Historic history has been created. Historic landing has already happened.
this I took this quotes because West media or Western countries are looking at India as a very potential thing. म्हणजे तुम्ही आम्ही म्हटलं की though sometimes our population is negative, it also has a lot of positive effects to us also. So हे सगळे जेन्ना पळयता आनी आयज फोकस विथ जिओ पॉलिटिक्स म्हणा किंवा इन्व्हेस्टमेंट म्हणा किंवा इकॉनॉमिक जे आम्ही डेव्हलपमेंट पळयता और पोटेन्शियल टू ग्रो or maybe the language, the landscape, the geography that we have, I think AI sudda a lot of things are kind of focusing towards India. With this feat now, how does the India position itself in the space research program globally? In fact, if you just look back about 10 years ago, US has really opened up. When I say US, so NASA has limited collaboration with only few countries, and India was not part of that. Okay. It has really opened up in just last 10 years. Correct. And that, if you really see, it's only because of the success and the space exploration that India is doing. And now, of course, ISRO has been doing it very, very efficiently. So now, when any country will look, of course, economically, India launches anything at very, very small financial aid. So that is, of course, one thing, but also the reliability. Reliability for launching any vehicles, India does it very, very good, and for a very small amount. But what is the reason for cost effectiveness? Of course, की आम्ही बाकीचे सगळे जण व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह करता, आम्ही cheaper it, we sometimes meme them saying that your transformer is of a certain budget and our Chandrayaan 2 or Chandrayaan 3 is of that budget. Yeah, so it is like as good as doing a movie. Yeah, now of course that comparison may not be fair, but the way we do it, for example, ISRO जे Chandrayaan 2 launch केले, Chandrayaan 3 launch केले, they were all launched using some techniques that are also available for other countries. जशें हांवें पयलीं म्हटलें, रशियेनूय लॉन्च केलें लुना 25, बट दे सेंड देयर रॉकेट्स डिरेक्टली फ्रॉम अर्थ टू दी मून, आनी 12 दिसांनी ते थंय पावले ऑलमोस्ट. ओके, हावेवर चंद्रयान 3 जें आसा तेका ऑलमोस्ट 42 दीस लागले. द रिजन इज दॅट पयलीं एक 5 फावटी वेन चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च, इट टूक अबाउट 4 or 5 ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ, आनी द रिजन वाय इट इज because Earth also rotates in counterclockwise direction. जेन्ना Chandrayaan 3 जेन्ना launch केलें, it goes around the Earth for 5 times. But because Earth rotates, that rocket also takes some speed from the Earth, and without using any fuel, it can increase the speed. So it is literally taking that speed from Earth for free. So we are saving. We are saving on the fuel. नाजाल्यार लॉन्च करपाकूच आमकां different technology is required. It becomes more expensive. आणि ते जेन्ना परत lunar जेन्ना धाडटा orbiting, we just do it in the opposite direction. So we lower the speed. So we are not using any extra fuel. कित्याक extra जर fuel आमी use केलें जाल्यार extra launch करपाक आमकां we need extra fuel, म्हणजे extra cost, and that is where India saves. So I think another important thing is amka sagrang minerals जाय for our growth of economy that we have, the kind of gadgets we have, with respect to resources, minerals म्हणा, हे obviously amka आता स्पेसाकडे पळोवचेच पडटले. Also we are looking forward in terms of getting humans out there with respect to colonies and all those things. I don't know how, what is the time zone, maybe 10 years, 20 years, 30 years, we don't know that, but work has been going on. How do you see as an astronomer? Because as a layman, it might look like wow, it's a good fantasy to be in. Correct. But how do you see this happening? So already एक international space station asa, America, Japan, Russia and Canada, they are all partners, and it has been quite successful. So equivalent, म्हणजे थंय कितें आसा international space station about 400-500 kilometers above the earth. International space station पृथ्वी भोवती फिरता. So astronauts can go and stay there and can do the experiments and can come back. Gaganyaan जे इंडियाचे मिशन आसा, so it will if everything goes on time, 2024 that will be ready. म्हणजे Indian astronauts will be able to go in space, stay there for 1 week and then come back, do some experiments and come back. Why it is really, really essential is because जशे पृथ्वीचेर आमकां ग्रेविटी फील जाता, तशी ऑर्बिटान आमकां जावं स्पेसान आमकां फील जायना.
देर ह्युमन बॉडी इवॉल्व्स डिफरंटली. आणि अमेरिकेन ते ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट केल्ले. फॉर एक्झाम्पल ट्वीन एस्ट्रॉनॉट्स, एक भाव जो आसा पृथ्वीचेर आनी दुसरो भाव तो ट्वीन ब्रदर स्पेसान वचून एका वर्सान परत आयलो. सो वॉट आर फिजियोलॉजिकल चेंजीस दॅट हॅपन इन दॅट पर्सन, आणि दॅट वॉज डन बिफोर अँड आफ्टर, आणि दे रियली सॉ लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजीस. फॉर एक्झाम्पल आमची जर बॉडी क्युअर जर फास्ट जाता स्पेसान, ती जर पॉसिबल आसा, देन वी कॅन सेंड पेशंट्स इन स्पेस and then bring them back within 1 day, 2 days, if that is possible. So those kind of experiment amka jar na ni Indiaच्या space station, we will not be able to do it, and that information we will not have. Okay, so I think what Russia with Luna 25 took is they tried direct Chandra. We took a different route, and obviously and I think we have hit the success thing with respect to today's development. Thank you very much for joining us, for having this wonderful session, and obviously with me being part, obviously we both were part of the history making. Also all the people who are watching us on social media, YouTube जाव, Facebook जाव, वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स आसात ताजेर तुम्ही पळयले, आणि आय थिंक कोलॅबरेटली जशें हांवें म्हटलें की हे फक्त गोंय किंवा देश किंवा हे बाउंड्री पुरते मर्यादित ना. आय थिंक इट वॉज सेलिब्रेशन ऑफ द एंटायर ग्लोब. इवन दो रशिया कुड नॉट मेक इट, आय थिंक इंडिया मेड इट, बट इट इज द विन ऑफ ह्युमन काइंड. दिस Chandrayaan 3 will help other countries also with respect to collaboration and with respect to their endeavor to explore the moon. आणि obviously आमच्या पंतप्रधान मोदीन म्हटलाच की फुडें आणि खूब आसा. जशें तांच्यांनी मेन्शन केलें की आदित्य L1 आसा, गगनयान आसा, शुक्र तारो आसा, हे सगळे ओवर अ कोर्स ऑफ टायम जायत रावतले. आय मायट बी साउंडिंग स्टुपिड, बट आय रियली वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आय एम रियली हॅपी. I could not end up on a bizarre note saying that if I can quote a Bollywood song which says, "ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या इसरो की, विक्रम तूने बनाया." Well, I wouldn't let you go on this note, on this Bollywood song, but we will switch to the celebration जे जाल्ले कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सान. थंयसरले सेलिब्रेशन पळोवया, बिकॉज द किड्स आर द फ्युचर ऑफ आवर एंटायर कंट्री जनरेशन. तेंच्यांनी हें सेलिब्रेशन कशें केलें, बिकॉज ओवर द नेक्स्ट 20, 30, 40 ऑड इयर्स जेन्ना आमी हें जे फॅन्टसी उलयता तेन्ना ती रियालिटी जातली, आनी त्या रियालिटीच्या टायमार ते म्हणटले की आय वॉज पार्ट of that celebration when India landed on the South Pole. It was a soft landing when Vikram landed on the South Pole. आणि फुडें आमी आतां कळटलें आमकां प्रज्ञा रोवर आमचो कितें आमकां इन्फॉर्मेशन दितलो, आनी आमच्या देशाची आनी ऑब्वियसली ह्युमन कायंडाची दिशा थारायतलो. विल स्विच टू द कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स फॉर द सेलिब्रेशन.